on behalf of Premier Energies Limited and the book running lead managers to the issue. I would like to welcome you all to today's press meet. We at ICICI Securities Limited, and I speak on behalf of all my fellow BRLMs, feel extremely proud to have been associated with Premier Energies and its remarkable team throughout their IPO journey. Introducing the team on the dais today, we have Mr. Chiranjeev Saluja, who's the Managing Director, and Mr. Adapa Srinivas, who's the Chief Growth Officer. Let me give you a brief introduction on Premier Energies. So with nearly 3 decades of experience in the solar power industry, Premier today is one of India's leading integrated PV solar cell and module manufacturers. The company's depth of experience in both solar cell and solar module manufacturing, established market presence, track record of capacity enhancements, and vertical integration have not only resulted in it achieving its present market position, but also poise it to seize growth opportunities in the solar energy industry within India and overseas. Premier Energies is also backed by GEF Capital, a global private equity management fund focused on investing in climate solutions. It is led by experienced promoters and a professional management team. Some of the strengths of the company are as follows: that Premier Energies is the second largest integrated solar cell and solar module manufacturer in India in terms of annual installed capacity. The company is on course to commission a TOPCon solar cell line with an annual installed capacity of 1 gigawatt within fiscal 25. Premier is also the largest Indian exporter of solar cells to the United States, which is one of the largest markets for solar modules globally. It has a diverse customer base within India and overseas, with a robust order book of nearly 6,000 crores. Now turning our attention to the IPO details. The issue is an initial public offering of equity shares of face value of rupees 1 each, aggregating up to INR 2,830 crores, with a combination of a fresh issue of 1,291 crores and an OFS of 1,539 crores. The price band for the IPO has been fixed from 427 to 450 per equity share. Bids can be made in a minimum of 33 equity shares and in multiples of 33 equity shares thereafter. We now have a corporate film which we would like to run you through, and then I hand it over to Chiranjeev and his team, who will take you through the presentation. Established in the year 1995, Premier Energies has risen to become India's leading integrated solar cell and solar module manufacturing company. Backed by GEF Capital, Premier Energies has 28% share of the total installed integrated solar capacity in India. We serve diverse customers across India and international markets, and are the leading Indian exporter of solar cells to the US. Our manufacturing facilities are spread across multiple acres in Telangana, India, and our facility is India's first LEED Gold rated solar manufacturing facility, certified by the US Green Building Council. We operate 2 gigawatt capacity cell lines and have gained technical expertise in the complex technical process of solar cell production. Also, our existing monocrystalline PERC solar cell lines are upgradable to the new technology of TOPCon. We have a 3.36 gigawatt annual capacity of module manufacturing. Our modules have been rated as top performer 2 times in a row in the PV Evolution Labs 2023 and 2024 PV Module Reliability Scorecard and adhere to multiple global certifications. Our vision is to be the world's leading integrated PV solutions manufacturer by building on the following everybody, and I'd like to thank all of you journalists who are here today. आप लोग जो काम करते हो वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज पूरी दुनिया जो आप लिखते हो वो पढ़ते हैं और उसको बिलीव करते हैं. तो आई एम हियर टुडे टू प्रेजेंट प्रीमियर एनर्जीज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर.
So I've got Srini Adappa with me today, जो हमारे चीफ ग्रोथ ऑफिसर हैं. श्रीनी यूएस की मार्केट का मतलब टारगेट करके यूएस में रहते हैं वो, एंड उस मार्केट का टोटल जो साइज है और उस पे वो उनका पूरा ग्रोथ मार्केट वहाँ पे है. मूविंग ऑन टू द जर्नी ऑफ द कंपनी. प्रीमियर एनर्जीज जो ये कंपनी है ये 1995 में इनकॉर्पोरेट की गई थी बाय माय फादर श्री सुरेंद्र पाल सिंह सरूजा, जो इस कंपनी के चेयरमैन हैं. ही इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द कंपनी इवन टुडे. तो उस टाइम पे वो जो बिजनेस करते थे वो हैंडपंप्स का बिजनेस था और विलेजेस में हैंडपंप सप्लाई करते थे. तो उनको वो नीड फॉर एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी टू दोज रूरल विलेजेस विच हैड नेवर सीन इलेक्ट्रिसिटी इन देयर लाइफ इज व्हाट पुश्ड हिम टू गेट इनटू दिस बिजनेस. एंड ही सेड, लुक, दिस इज वन बिजनेस वेयर यू डोंट नीड एनी रॉ मटेरियल. द रॉ मटेरियल इज सनलाइट. एक बार आपने पैनल लगा लिया तो वो चलेगा. तो उस टाइम पे उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की 1995 में. पहले हम इन अ वेरी स्मॉल वे शुरू किया था. वी यूज्ड टू मेक सोलर लैंटर्न, स्ट्रीट लाइट्स, होम लाइट्स. एंड बिटवीन 1995 एंड 1999 प्रीमियर ने करीबन 10 लाख मिलियन हाउसेज इलेक्ट्रीफाई किए थे इन इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश. ये प्रोजेक्ट्स होते थे उस टाइम पे KFW फंडेड, एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड. एंड वो एक अलग जमाना था कि जब हम जाके देखते थे कि विलेजेस में जब लोग ये सोलर लैंटर्न से बच्चे पढ़ते थे या स्ट्रीट लाइट थी, उन्होंने विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी कभी जिंदगी में नहीं देखी थी उस टाइम पे. 1997 आई हैड जॉइन दिस कंपनी एंड देन वी थॉट कि हमको बैकवर्ड इंटीग्रेट करना है. कब तक सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो हम सोलर पैनल खुद क्यों ना बनाएं. उस टाइम पे भी सोलर पैनल जो थी वो सेलर्स मार्केट थी, उतना प्रोडक्शन था नहीं जितना डिमांड था. तो we started solar panel manufacturing 25 years ago in Hyderabad in a very small way. 3 megawatt per annum का प्लांट था. एंड हम जो है हमारे सोलर सेल्स जो थे उस टाइम पे जर्मनी से लाते थे. There was a company in Germany called Shot Solar and we used to buy the cells and make the panels in India. फिर 2010-2011 में इंडिया मूव फ्रॉम ऑफ ग्रिड मार्केट टू एन ऑन ग्रिड मार्केट. आज सब ऑन ग्रिड मार्केट ही समझते हैं. अभी सोलर लैंटर्न, स्ट्रीट लाइट तो ज्यादा यूज करते नहीं लोग. आजकल यही है कि आप सोलर पैनल लगाओगे और आपने ग्रिड में फीड कर दिया. एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर यू नो गुजरात इज नंबर 1 इन दिस. इन टर्म्स ऑफ रूफटॉप आल्सो गुजरात लीड्स द वे. जितना सोलर इंडिया में गुजरात में चलता है वो कहीं और नहीं है. राजस्थान में भी प्लांट्स लगने शुरू हो गए हैं, बट इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात. सो 2010 में इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड कि हम वी विल अलाउ पीपल टू कम एंड सेट अप पावर प्लांट्स एंड फीड पावर इनटू द ग्रिड. एंड दैट इज द टाइम दे आल्सो स्टार्टेड अ प्रोग्राम वेयर दे सेड called a DCR program. DCR program is called the Domestic Content Requirement Program. इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमको अपना लोकल इंडस्ट्री भी ग्रो करना है. वी जस्ट कांट बी इम्पोर्टर्स. सो दे सेड कि DCR मॉड्यूल वो रहेगा जहां पे सोलर पैनल और सोलर सेल दोनों इंडिया में बनाना चाहिए. तो उस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए 2010 में हमने उस जर्मनी की जो कंपनी थी उनसे टाई अप करके हमने उस टाइम पे सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया. दैट इज 14 ईयर्स अगो. 75 मेगावाट का सेल लाइन हमने शुरू किया था उस टाइम पे. फिर उसके बाद 2021 में एक प्राइवेट इक्विटी फंड है विच इज कॉल्ड GEF कैपिटल. GEF कैपिटल का जो फंड है इट्स कॉल्ड द साउथ एशियन ग्रोथ फंड 2. GEF कैपिटल ESG फोकस्ड फंड है. दे वर अर्ली इन्वेस्टर्स इन ग्रीन को. दे आर इन्वेस्टर्स इवन टुडे इन रेन्यू पावर. दे वर अर्ली इन्वेस्टर्स इन रेवा इलेक्ट्रिक कार. तो दिस वाज अ ग्रीन ESG फोकस्ड फंड एंड वी वांटेड टू ग्रो फ्रॉम वेयर वी आर. तो उस टाइम पे GEF ने हमारी कंपनी में 177 करोड़ इन्वेस्ट किया था एज इक्विटी. उस इन्वेस्टमेंट से वी हैव ग्रोन आवर मैन्युफैक्चरिंग. आज हम 2000 मेगावाट का सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चलाते हैं जो फुल्ली ऑपरेशनल है और 4134 मेगावाट का मॉड्यूल लाइन चलाते हैं. हमारे जितने भी ये प्लांट्स है ये पूरे हैदराबाद में है. हैदराबाद एयरपोर्ट से 1 घंटे के डिस्टेंस में. एंड आज हम इंडिया के लीडिंग सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर जाने जाते हैं. इंडिया में और काफी अलग कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन कई लोग सिर्फ मॉड्यूल बनाते हैं. हम मॉड्यूल और सेल बनाते हैं. आपकी जानकारी के लिए अगर हमारी टाइप की और कंपनीज देखो तो अदानी सेल एंड मॉड्यूल बनाता है, टाटा सेल एंड मॉड्यूल बनाता है. हम भी सेल एंड मॉड्यूल बनाते हैं, सिर्फ मॉड्यूल नहीं बनाते. सो वो मेरा पॉइंट था कि इंटीग्रेटेड फैसिलिटी हमारी करीबन 29 ईयर्स से हम इस बिजनेस में हैं. हम ट्रांसिशन कर रहे हैं मोनोपर्क टेक्नोलॉजी से टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में. उसका मतलब यह है कि हम 23.5% एफिशिएंसी सेल से 25.2% एफिशिएंसी में जा रहे हैं. ज्यादा एफिशिएंसी ऑफ सेल का मतलब है कि आपके छत पे अगर आज सोचो जगह कम है और आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगा सकते हो, अगर एफिशिएंसी बढ़ती है तो आप 4 लगा सकते हो.
तो जितनी ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी आपको उतना कम स्पेस चाहिए अपने रूफ पे। हम इंडिया के लार्जेस्ट सोलर सेल एक्सपोर्टर हैं। पिछले साल जितने सोलर सेल इंडिया से यूएस गए हैं, यूएस में भी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो सोलर पैनल बनाती हैं, उन कंपनीज को सोलर सेल चाहिए बिकॉज यूएस में भी उतना सेल नहीं बनता जैसे इंडिया में उतना सेल नहीं बनता। सेल और मॉड्यूल में गैप है, इंडिया में भी यूएस में भी कैपेसिटी वाइज। तो हम यूएस को सोलर सेल एक्सपोर्ट करते हैं और यूएस के जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हमारे सेल यूज करके मॉड्यूल बनाते हैं फॉर द यूएस मार्केट। ऑन द मॉड्यूल साइड वी आर अ टॉप परफॉर्मर ऑन PVEL स्कोरकार्ड। PVEL इज कॉल्ड द PV एवोल्यूशन लैब। ये कैलिफोर्निया में लैब है, वन ऑफ इट्स काइंड, जो एक्सटेंडेड रिलायबिलिटी टेस्ट करती है मॉड्यूल पे। नॉर्मल टेस्ट नहीं करती है, एक्सटेंडेड रिलायबिलिटी टेस्ट। अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको टेस्ट 1x करना है, ये 3x करते हैं, 3 गुना दैन व्हाट इज स्पेसिफाइड। एंड 400 कंपनीज दुनिया में पार्टिसिपेट करती हैं इस टेस्टिंग स्कोर कार्ड में। एंड करीबन 35 कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको टॉप परफॉर्मर माना जाता है। वी टेक प्राइड कि वी आर वन ऑफ दोज कंपनीज जो 2023 और 2024 दोनों साल वी हैव बीन टॉप परफॉर्मर्स। ये जो स्लाइड है दिस विल गिव यू एन आइडिया कि व्हाट इज हैपनिंग इन दी सेल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो जैसे आप देख रहे हो लेफ्ट साइड आपके स्क्रीन पे कि सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में सिर्फ 8 गीगावाट की है, जबकि मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग 72 गीगावाट की है, 70। I handle the US business for the company. I work out of North America. Thank you for coming here and listening to our story. So, हम लोग जब कुछ साल पहले US में एंट्री करने का स्ट्रैटेजी बना रहे थे, we had 2 options, right? हम लोग, it's a big market for module. US in fact is amongst the top 3 global markets in terms of module installations. तो हमारे पास एक चॉइस ये थी कि you go as a module player, right? Because we are an integrated player. Then there's another choice which is to say offer sell as a product to the module players who are already in the US. And if you see our story, 29-30 years से we've been focusing on backward technology, focusing on cell as a core solar technology. तो हम लोग strategically ये option लेके आगे बढ़े थे कि sell basically provide solar cells made in India to solar module players in the US, right? Because उनका gap भी काफी gap है. For about 40 gigawatts of module, उनका local production is only 5 gigawatts of cell, right? So ये strategic opportunity हमने identify किए हैं और in the few years of operation in the US, आज की डेट में we are India's #1 supplier to the US as far as solar cells are concerned. Now coming to the growth plan जो आप slide पे देख रहे हैं, so इसको हम और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं with a local manufacturing plant in the US. So we want to set up a cell manufacturing plant in the US locally. But we want to be strategic and smart in doing it. That's why we're tying up with a local US company as a joint venture for this manufacturing plant. So the local US company is a very reputed company called Helion. They are a US Canada based company. वो लोग लगभग 20-22 साल से फैक्ट्रीज चला रहे हैं यूएस में और कनाडा में, तो लोकल ग्राउंड एक्सपीरियंस है उनके पास। एंड हमारा थिंकिंग ये है कि एज जॉइंट वेंचर पार्टनर्स प्रीमियर एनर्जीज वुड ब्रिंग cell technology, the operational expertise and years of understanding of how you set up and run a cell plant. Our partners in this case, Helion company in this case, will bring in the local knowledge of how you run a plant in the US. अगर आपको कोई utility connections चाहिए, आपको manpower बनाने हैं to run a plant. So that way it is a win-win joint venture and that would be our growth platform as we go ahead. Before I pass it back to Chiranjeev, I think one thing is of importance. US, yes, is a growth market for us, but हमारा belief ये है कि as we go ahead, it should be a diversified portfolio, right? We should not put all our bets on one market. So as you look at it today, our US market contributes to less than, our entire exports market actually contributes to less than 20% of sale, right? So it is well balanced that way. 20%, less than 20% is US. A lot of it is still domestic. I'd love to take your questions after the meeting, but I'll pass it back to Chiranjeev. Thank you, Srini. So moving on, these are the 4 buckets, which we are in the value chain. हम O&M करते हैं. EPC is what we do, solar modules, solar cells, and as we told, even ingot and wafer is what we are getting into. The partnership is already signed. Wafer lines are already ordered, so in about a year we would start with wafer manufacturing.
These are all the units you see on the screen, which are all our units in Hyderabad. Unit 6, which is on the rightmost corner, is the one which is the greenfield project coming up with the IPO primary raise. The blue colored bars are the solar cell line and the light green is the module line. On customer base, we got 117 customers domestically, 3 international. Some of the large names, PSU mein we work with NTPC. On US, as Srini just said, is Hylene. We are one of the large, Tata Power is one of our large customers. We supply solar cells to them. We do white labeling for Panasonic, for Luminous. In the independent power producer sector, we work with Semcor, with Blue Pine. Blue Pine is Actis backed. We worked with First Energy, which is a Thermax backed company. Solar Square जो रूफटॉप में बहुत प्रोमिनेंट है. शक्ति पंप्स, हम शक्ति को मॉड्यूल सप्लाई करते हैं उनके सोलर वाटर पंप्स के लिए. वी आर वन ऑफ द लार्ज सप्लायर्स ऑफ DCR compliant modules to them. अगर आप ऑर्डर बुक की बात करो, वी हैव एन ऑर्डर बुक ऑफ 5,926 crores as of 31st July. ये ऑर्डर बुक का रियलाइजेशन साइकिल 18 महीने है. एंड अगर आप रेवेन्यू की बात करो तो लास्ट ईयर we have done close with the revenue of 3,144 crores, whereas if you talk of our Q1 number of this year, we have done 1,657 crores, which is almost 50% of last year's revenue. This has only been possible because our plant capacity has doubled. We were earlier a 750 megawatt cell and about 1,400 modules. In October to December last year, we have added another 1250 cell, another 1600 module. So capacity double होने की वजह से हमारा revenue double हुआ है. And this is also because of strong demand in the market in the solar space. This is how the senior management team looks like. We have got as our group chief financial officer, Mr. Nand Kishore Khandelwal. NK Khandelwal ji is a chartered accountant with about 30 years of experience, and prior to joining us, he was the CFO of a listed company called Pitti Engineering. Srini, of course, he already spoke. I would love to introduce Srini. Srini operates out of the US-Canada market. Prior to joining us, Srini was a director in Tim Hortons in Canada. Prior to that, he was the chief marketing officer of Burger King, and prior to that with Kellogg's. So he comes with a lot of experience on the marketing side. We got Sudhir, who's our chief strategy officer. Sudhir, prior to joining us, was with PwC in the US. Sudhir leads strategy in the company, expansion plans, technology. We got Ravila Srinu. American market, Chinese companies cannot supply. It's totally banned. So the US has been very clear under the Uyghur Forced Labor Act, where Chinese cells cannot go into the US. So Chinese companies are now setting up facilities outside China in Vietnam, Thailand, Cambodia, and different places to export to US. From China, they cannot. But if these, constraints against China were removed, they would be probably very competitive, right? Their costs would probably be much lower than yours. So if you talk about China independently, let's just talk about China, what happens in China and how China is able to grow manufacturing so much. Why is it that China has become the world factory? Why is it that no other country is able to, go to that scale? Because all of us, if you look at India, right, I would like to share something with you that in China, in the year 2001, 2002, when one of the very first Chinese companies started making cell and modules in a very small way at that time, 23 saal pehle, the company is very large today. You would be happy to know that Indians went and taught them how to manufacture cells. I know people personally who have gone there and shown them how to make solar cells. We have been way ahead of them at that time in technology. What is China great at? China is great at scaling up. They are great at government support, and government supports them to an end that they could come and finish industry in other countries. And what we miss out of this is we miss our manufacturing story, that we don't have manufacturing locally in our countries, be it US, be it India. Manufacturing creates a lot of jobs. If you're comparing, if China plays apple to apple, India and China production cost will be only 7 to 8% more expensive.
not what it is today. So if you look at China over a period of time, their prices are very volatile. The same solar cells which they are selling today, 6 months back, these prices were 150% more than what they are today. So what has happened in the last 7-8 months that prices have dropped? It's just because they dump. When they want to dump, they dump so that industries don't come up in other countries. So another example I can give you. Let's say you were putting money in a bank in Germany a couple of months ago or a year ago. In Germany, to put money in a bank, you would pay the bank money to keep your money, right? But in India, when you put money in your bank, you get interest. In Germany, you would give them $1 million and tell them, here is, $5,000, please keep my money. Don't give me interest. It was negative interest, right? That doesn't mean that banks in India are paying you interest, so why are they paying you? Or if you look at, there are still today, you get sometimes reels in Instagram, if you use, that in Italy, there is a village where there is a house, where there's a village where they say, please come, we give you a house here for free to stay. They don't have population. Doesn't mean that the builder in India cannot compete with them. वहाँ तो घर फ्री में मिल रहा है, यहाँ तो बिल्डर आपसे 2 करोड़ 4 करोड़ ले रहा है, तो वो compete कैसे करेगा? So there are two different situations. So China का situation is a totally different situation. But today China selling cheap is a big advantage for India. We are able to import those solar cells from China and get modules made in India and deploy them in the power plants in India. So India is taking a full advantage of China low prices. At the same time, India is growing its manufacturing story. आपका एक्सपोर्ट कितना है? Less than 20%, sir. So then you are importing. जी sir. When you are importing 52% raw material from the China, so how you will able to compete with China and the Southeast Asian countries? जी सर, साउथ ईस्ट एशिया से तो हम compete करते हैं आज भी. आज जो हम सोलर सेल यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट का जो प्राइस है दैट इज वेरी कॉम्पिटिटिव विद साउथ ईस्ट एशिया. एंड साउथ ईस्ट एशिया हम उन्हीं कंपनी से कम्पीट करते हैं जो चाइनीज कंपनी साउथ ईस्ट एशिया में मॉड्यूल सेल बना रही है. तो अगर उनसे हमको कम्पीट करने में कोई दिक्कत नहीं है. आप जो बोल रहे हो 62% हम जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, आज से 2 साल पहले हम 82-83% करते थे. 62 इसलिए हुआ है क्योंकि हमने हमारा सेल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो किया है. तो वी हैव इम्प्रूव फ्रॉम 80 to 60. एंड जब हम इनगॉट वेफर बनाना शुरू कर देंगे, हम और भी चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी. चाइना से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली यही है कि आज सोलर इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. टुडे इफ यू इंस्टॉल सोलर इन इंडिया, पावर इज अवेलेबल लेस देन 2.5 rupees. With battery around 5 rupees. It is much competitive compared to thermal. Then for a minute, keep aside the commercials. Gujarat is the place which has taken the lead. Ki you have to think about your future generation also. We cannot keep using coal. We have to think about green. We have to think about pollution. We are seeing what is happening in New Delhi when the smog happened there. So what I'm trying to get at is ki we are reducing our dependence on China by getting into backward integration, and we don't need to compete with China once we have the ecosystem in India, which our government, Prime Minister Modi ji and MNRE is working very seriously on to create the whole ecosystem in India. At present, 75% of the gross proceeds will be used for the funding your loss-making subsidiaries. So sir, ये जो this subsidy will be out of force. सर ये सब्सिडरी लॉस मेकिंग, द लॉस व्हाट यू सी इज ओनली बिकॉज ये सब्सिडरी अभी रिसेंटली हमने बनाई थी फॉर सेटिंग अप द मैन्युफैक्चरिंग. आप कोई भी नवी कंपनी जब चालू करते हो, जब तक उसका प्रोडक्शन शुरू नहीं होता तो वो लॉस मेकिंग तो रहेगी. जब उसमें प्रोडक्शन आ जाएगा, सेट पूरा प्रोडक्शन स्टेबलाइज हो जाएगा, देन इट बिकम्स प्रॉफिटेबल. बट अगर आप कंसोल लेवल पे देखते हो कंपनी, तो वी आर नॉट अ लॉस मेकिंग, वी आर अ वेरी reasonably profit making company. Last year FY24 was a 233 crore of profit. Now जैसे मैंने आपको बोला प्रेजेंटेशन में, सेल लाइन लगाने के लिए 2.5 साल लगते हैं और उसको स्टेबलाइज करने को 6 महीने लगते हैं. तो हम एक्सपेंशन जब भी करेंगे, उसको स्टेबलाइज होने तक there will be a period when we will not make profit. Why the company incurred loss in 22 and 23? जी, that's a good question, sir. तो सर